So the core Python 10 questions. Explain the difference between range and xrange in Python 2 and iterations in Python 3. Range, xrange in Python 2 and iterators in Python 3. इसमें difference बताना है हमने. तो range creates and returns a list of number consuming memory. List of numbers consuming memory. Xrange and range in Python 2. Python 3 returns the memory efficient iterator object that yields the numbers on demand. Iterators and are objects that implement the iterator protocol. Iter and next underscore underscore iter and underscore underscore next underscore underscore, allowing the efficient efficient lazy data processing. ओके सो ये आंसर है, लेकिन हमें कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लगा, तो हम ये इसे कॉपी करते हैं. ओके, ऐसे कॉपी नहीं होगा, कॉपी करते हैं और हम इसे यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं. तो यहाँ पे रेंज, द फंक्शंस रेंज in Python 2 and Python 3 and xrange in Python 2 only. Range Python 2 and Python 3 में है, xrange in Python 2 only are methods for generating the sequence of numbers, sequences of numbers. In Python 3, the range has been fundamentally changed to behave more like old xrange, leveraging the concept of iterators. ओके तो रेंज किस में है? पाइथन 2 में भी है और पाइथन 3 में भी है, और एक्स रेंज बस पाइथन 2 में था, लेकिन रेंज इन पाइथन 3 मॉडिफाई हुआ है, फंडामेंटली चेंज्ड, मॉडिफाई टू बिहेव मोर लाइक ओल्ड एक्स रेंज, ओल्ड एक्स रेंज के जैसा बिहेव करने के लिए मॉडिफाई हुआ है. हियर इज एक्सप्लेनेशन एंड डिफरेंस बिटवीन दीज between these constructs and how they relate to the iterators. Okay, so range in Python 2 the लिस्ट जनरेटर था. रेंज पाइथन 2 में क्या था? लिस्ट जनरेटर था. बिहेव इट लिस्ट, इट वाज अ लिस्ट जनरेटर. मेमोरी यूसेज हाई, इसका मेमोरी यूसेज हाई था. इफ यू आस्क फॉर अ रेंज दिस नंबर, इट क्रिएट्स द लिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ इंटीजर्स इमीडिएटली. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इनिशियलाइजेशन O of n था. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आइटम्स, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आइटम्स था. एक्स रेंज इन पाइथन 2 क्या था? इटरेटर जनरेटर था. मतलब बिहेव इटरेटर जनरेटर स्पेसिफिकली रिटर्न द एक्स रेंज ऑब्जेक्ट्स दैट एक्टेड एज एन इटरेटर. मेमोरी यूसेज उसका लो था, O of n था, लो था, कॉन्स्टेंट मेमोरी यूसेज. इट ओनली स्टोर्ड स्टार्ट एंड स्टॉप एंड स्टेप वैल्यूज. वो बस स्टार्ट एंड एंड स्टेप वैल्यू सेव करता था. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इनिशियलाइजेशन नियर इंस्टेंट रिगार्डलेस द साइज, नियर इंस्टेंट. ओके, और रेंज जो है पाइथन 3 में इज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. So it is an iterator generator, specifically a range object. Memory usage low, O of 1, and time complexity O of 1. Memory usage O of 1 and time complexity O of 1. अभी पाइथन 3 में रेंज 0 to 5 बिहेव्स लाइक एन एक्स रेंज, ओल्ड नॉट द ओल्ड पाइथन 2 रेंज की तरह बिहेव नहीं करता है. what is iterator? The concept that links the x range in Python 3 the range is iterator protocol. Python 3 की जो रेंज है, the links x range and Python 3's range is the iterator protocol. ये iterator protocol है. iterator is simply an object. iterator क्या है? एक object है that represents the stream of data. It implements two key methods, underscore underscore iter, it underscore underscore bracket and underscore underscore next underscore underscore bracket. The key characteristic of an iterator is lazy evaluation. What is lazy evaluation? Lazy evaluation means that the data is not computed until you explicitly ask for the next item. Data is not computed until you explicitly ask for the next item. next item के लिए पूछते नहीं है तब तक डेटा compute नहीं होता है. when you next item के लिए पूछते नहीं है तब तक डेटा compute नहीं होता है.
When you use list, range in the py2 list, when you use list, a range in py2, the Python calculates everything immediately, eager evaluation. And when you use xrange in py3, Python waits until for loop to ask for the first number and calculates it, and then waits again for the second request, so on. Summary. Output. Output type list, xrange and range. Now the memory efficient list है क्या? नहीं. Stores all the numbers. xrange है क्या? Stores only start. Yes, क्योंकि it stores only start, stop and step. And range है क्या? Yes, it stores only start, stop and range. Initialization step 0 of n, और यहाँ की xrange में इनिशियलाइजेशन स्टेप क्या है? 0 of 1. एंड रेंज में इनिशियलाइजेशन स्टेज क्या है? इंस्टेंट 0 of 1. recommended use small ranges only, preferred over range, and standard practice for all ranges. xrange preferred over range, और पाइथन 3 में रेंज इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉर ऑल रेंजेस. ओके, अभी होपफुली समझ में आया डिफरेंस. Now the next question is, what is a Python decorator and how are they useful in MLOps or data science? A decorator is a function that takes another function and extends or modifies its behavior without explicitly modifying it. A decorator is a function that takes another function. Decorator क्या है? एक function है that takes another function and extends or modifies its behavior, और उसे extend करता है या तो modify करता है without explicitly modifying it. उसे explicitly modify नहीं ना करके उसे extend या modify करता है. In MLOPs, they are useful for tasks like logging, automatically logging the execution time and argument of an training function, catching, memoization, catching the output of an expensive feature engineering function, logging क्या है? automatically logging the execution time or arguments of an training functions, automatically logging the execution time or argument. How are they useful in MLOPs or data science? Decorators कैसे यूज होते हैं? तो is the function within function is a function that takes another function and extends or modifies it without explicitly modifying it. In MLOPs, they are useful for tasks like logging जैसे tasks होते हैं, automatically logging the execution time or argument of a training function, catching, memoization, catching the output expensive feature engineering function. Now explain the global interpreter lock and its impact on data science. एंड अगर इसे भी हमें ज़्यादा डीप में समझना है तो देखते हैं. ओह शिट, तो देखते हैं. Python decorator is a design pattern that allows user or dynamically add a new functionality to the existing object, like a function or method, without modifying its structure. Decorators wraps another function, enhancing it before after original code runs. Decorator is a function within function. The decorators are useful in MLOPs and data science in machine learning operations and data science workflows. The decorators provide clean and non-intrusive ways to inject repetitive cross-cutting concerns like logging, timing and validation into many different functions across pipeline. Here are specific use cases: timing, performance monitoring. Machine learning operations pipelines often involve functions that run for a long time, training a large model, pre-processing massive datasets, and decorators can automatically log how long step to complete.
Timing decorator function, diff wrapper argument kwr, and start time function end time ये है. Logging and experiment tracking, machine learning flow and weight and biases. Machine learning operations, platforms like machine learning flow, every step is workflow. In workflow needs to log metrics, parameters and artifacts to central server. A decorator can manage the boilerplate code of starting and ending an experiment run for a given function. Catching the and memoization, the data science models often run same data preprocessing steps multiple times across the different experiments. The decorator can catch the results of the functional call to subsequent calls with the same input arguments, returns the stored results immediately, saving the computational resources. Retrying fail operations, सॉरी क्या है ओके तो समहाउ समझ में आया, समहाउ नहीं आया. एक्सप्लेन द ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक and its impact on data science tasks. Global interpreter lock, GIL, global interpreter lock. So the global interpreter lock is a mutex that prevents the multiple native threads from the executing Python bytecodes simultaneously. That prevents the multiple native threads from executing the Python bytecodes simultaneously. It means that Python is generally poor at true parallel execution of CPU bound tasks. For data science, it is often mitigated because libraries like NumPy pandas release the global interpreter lock. And during computationally intensive operations, like example for matrix multiplication, allowing them to use the optimized C Fortran code and that runs in parallel. What is the difference between init and call function? Call in Python class. Init is a constructor and it is called when instance the class is created. Object class name. Call allows the instance of the class to be called as if it were function. This is often used in the PyTorch and TensorFlow. कॉल PyTorch और TensorFlow में यूज़ होता है और allows an instance of the class to be called. Scikit-learn for custom layers and or for the scikit-learn pipelines for the custom transformers. How do you swap the values of two variables in the Python without using temporary variable? Use a tuple packing and unpacking. A comma B is equal to B comma A using tuple packing and unpacking. A comma B is equal to B comma A. What is the generator functions? What are the generator functions and why are they preferred for processing large data streams? Generator functions use the yield keyword instead of return. Generator functions use करते हैं yield keyword instead of return. They produce the sequence of results one at a time, pausing the execution and saving state until the next item is requested. They are preferred because they calculate the values lazily, consuming minimal memory, and ideal for streaming the large data sets. Reading the massive log files for the sensor where loading entire data into memory is impossible. What are the generators functions and why are they preferred for the processing large data streams? Generator functions use the yield keyword instead of return. Generator functions use yield keyword use करते हैं वो instead of return. They produce a sequence of results one at a time, pausing the execution and saving state until the next item is requested. Pausing the execution and saving the state. Pausing the execution and saving the state until the next item is requested. They are preferred because they calculate values lazily. ते prefer केले जातात कशाला? Because they calculate the values lazily.
कंज्यूमिंग मिनिमल मेमरी कंज्यूम करते हैं, विच इज़ आइडियल फॉर स्ट्रीमिंग द लार्ज डेटा सेट्स, जो कि आइडियल है लार्ज डेटा सेट्स के लिए. रीडिंग मासिव लॉग फाइल्स और सेंसर डेटा, where loading is the entire data set is into the memory is impossible, जहाँ entire data set memory में load करना impossible है. explain the list explain try, except and finally in the exception handling. Try contains the code that might raise error. Try contains the code, try में क्या होता है, कोड होता है जो एरर हो सकती है उसमें. Except catches the error and executes the handling code. Except catches the error and executes the handling code. Except क्या करता है, वो error catch करता है और जो handling code होता है वो execute करता है. Else executes if the try block completes without any exception. अगर try block without any exception complete हुआ तो else execute होता है. And finally always executes regardless of whether an exception occurred or was handled. exception occur हुई हो या handle हुई है, वो finally execute करता ही है. What is the purpose of if underscore name is underscore is equal to main? Name is equal to main. This block of code runs only when the file is executed directly. ये ब्लॉक का कोड कब रन होता है, जब फाइल डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाती है. मतलब क्या, इफ़ द फाइल इज इम्पोर्टेड एज एन मॉड्यूल इनटू द अनदर स्क्रिप्ट, अगर कोई फाइल एज ए मॉड्यूल इम्पोर्ट की गई है इनटू अनदर स्क्रिप्ट, दिस कोड ब्लॉक इज स्किप्ड. ये कोड ब्लॉक स्किप हो जाता है. अगर कोई फाइल एज ए मॉड्यूल इम्पोर्ट की गई है इनटू अनदर स्क्रिप्ट, देन नेम इक्वल टू मेन, ये स्किप हो जाता है. इट इज़ इसेंशियल फॉर स्ट्रक्चरिंग पाइथन प्रोजेक्ट्स एंड ensuring द मॉड्यूल imports don't trigger unwanted execution. It is essential for structuring Python projects के structure के लिए and ensuring the module imports, और module imports के insurance के लिए. imports don't trigger unwanted execution trigger ना हो, इसलिए ये important है. and it is executed directly when the file is it runs direct when file is executed directly. Okay, so the next question is, how do you implement the exponentiation and element wise modulo operations efficiently in the Python? Use built-in operators, exponentiation x into y, or POV x or modulo x. Large scale data always use numpy's vectorization operations, np.power, np.mod. How do you implement exponentiation and element wise modulo operations? exponentiation के लिए x डबल स्टार y मतलब x रेज टू y और x और POV x इन ब्रैकेट x कॉमा y ये यूज़ करते हैं. मॉड्यूलो के लिए x मॉड्यूलो y, और लार्ज स्केल के लिए में डाटा हो तो NP पावर और NP मॉड यूज़ करेंगे. Explain list comprehension versus generators and provide a use case for each. List comprehension creates and returns the complete list in the memory immediately. List comprehension क्या करती है, returns the complete list in the memory immediately. complete list memory में returns the complete list in the memory immediately. Use case, creating the small or new list quickly, filtering the list of sensor IDs. Generator returns the returns at iterator that yields item one by one. Use case, processing the large sequence of data without memory constraints. Large sequence of data विदाउट मेमरी सीक्वेंस के कंस्ट्रेंट के करना है. इटरेटिंग थ्रू द लार्ज डेटा सेट्स फाइल लाइन बाय लाइन, तब जनरेटर्स यूज होते हैं. वर्सेस जनरेटर, कॉम्प्रिहेंशंस वर्सेस जनरेटर एंड प्रोवाइड यूज केस फॉर ईच. कॉम्प्रिहेंशन वर्सेस जनरेटर्स. अभी कॉम्प्रिहेंशंस में क्या होता है, क्रिएट एंड रिटर्न्स द कंप्लीट लिस्ट इन द मेमरी इमीडिएटली,
एंड रिटर्न्स द जनरेटर में क्या होता है, रिटर्न्स एन इटरेटर दैट यील्ड्स आइटम वन बाय returns an iterator that yields items one by one, that yields item one by one.